Can you guys see my screen? Okay, I think most of you are here. Good evening, sir. Good evening, good evening. Your voice is really low, but okay. Um, okay, let's start with revision. What all did we do last time? Amna, uh, would you like to tell us what all we started with? So we did thermal expansion. We talked about thermal expansion. So in We did the linear expansion, voluminous expansion, and the superficial. superfluous, and which was the third one? Voluminous. So this is the one-dimensional expansion. This is the two-dimensional version of the expansion. This is the three-dimensional version of that expansion. और तीनों इसमें there were some constants which were the constants of thermal expansion. For the linear case, the constant was alpha. For the two-dimensional case, the constant was beta, and following the trend, the three-dimensional case was gamma. Okay, इनका units याद है? Yes, sir. What is the unit? 1 by T. So temperature inverse. So essentially Kelvin inverse or whatever thing. Huh? 1 by K. 1 by K, yes, inverse. That's why I put a 1 minus one by here. T is time inverse. No? Huh? Because 1 by T is time inverse. Yeah, I put a K here for Kelvin, yes. Okay, what else did we talk about yesterday? Last time. Anybody else? Devashi? Divyanshi, sorry. Can you hear me? Can you not hear me? Is your mic working? Is your mic not working? Okay, छोड़ो. Abhinav, talk to me. Tell me, what else did we do last time? So we have done this and that some questions. Yeah, some question. लेकिन उससे पहले हमने इसके अलग-अलग उसके बारे में बात की थी ना? The Yes, sir. units of temperature. So essentially, we talked about temperature itself. And the different units of temperature like Kelvin, which is the one we're going to use, and this is the SI unit. Other than that, you have degree Celsius, you have degree Fahrenheit, and you had another one. Okay, so this is what we did last time. And we essentially also calculated the thermal expansion coefficient for an ideal gas, right? And what did we find out? We found out that gamma is equal to 1 by T, right? So to get a feeling of this number, let's just think about an ideal gas at room temperature, so which is 273 Kelvin. So what is the gamma? Can all of you just just quickly do this and just tell me what gamma does ideal gas have? Approximate number. कोई exactly नहीं चाहिए मुझे. Just put in the number here. बताओ बताओ जल्दी बताओ. 0.003. 0.003. So essentially this is almost equal to 3 into 10 raised to power minus 3 Kelvin inverse. Okay, make sense? Okay, Yes.
Lovely. So notice that at normal room temperature, the value of gamma is 10 to the power minus 3. This is for an ideal gas. और जब हम expansion और compression की बात करते हैं, obviously gases expand and compress more when you increase the temperature rather than solids or liquids. So आप जो expect करेंगे कि gamma for a solid or a liquid would actually be way smaller than 10 to the power minus 3. So around 10 to the power minus 4 or यहाँ पे 10 to the power minus 5 approximately. So ये approximately order of magnitude रहेगा कि गामा की values का expansion coefficients इनकी values का. Okay, lovely. Let's clear this now. Any questions अभी तक पिछली क्लास से? कोई doubts? नई चीज स्टार्ट करें क्योंकि फिर नई चीज नहीं मतलब we continuing with the thermal coefficients. No? Okay, I'll take that as a no. Lovely. Now we have the three coefficients, which are alpha, beta, and gamma. This is obviously for the linear case, this is for the two-dimensional case, and this is for the three-dimensional case. Now, अब अगर हमें इन तीनों में रिलेशन निकालना है, so very simple thing to do would be to let's just assume a cube of let's say air, let's say anything, but we're assuming it to be a cube. Well, this cube has some length L. So since it's a cube, so all the lengths are L. So अब इसमें जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ बाय सम डेल्टा टी, ओके, मानो मैंने डेल्टा सी टी से कुछ टेम्परेचर बढ़ाया, सो व्हाट विल हैपन इज दैट दिस विल स्टार्ट एक्सपैंडिंग. नाउ दिस क्यूब विल एक्सपैंड लीनियरली, उसका सरफेस भी एक्सपैंड करेगा, उसका पूरा वॉल्यूम भी एक्सपैंड करेगा, यानी कि तीनों चीज एक्सपैंड करेंगी, राइट? उसका ये लेंथ भी एक्सपैंड कर रहा है, उसका ये फेस भी एक्सपैंड कर रहा है और पूरा वॉल्यूम भी एक्सपैंड कर रहा है. तो how do you so what is the volume of this? Well, the volume of this is L cubed, right? Now we're heating this and changing it by delta T. तो हम लेंथ में चेंज हुआ मान लो कुछ which is L plus delta L. Okay, now this is your new length, उसका लेंथ बढ़ गई. व्हाट इज डेल्टा एल? कोई मेरे को फॉर्मूला याद दिला सकता है जो कल कैलकुलेट किया था हमने? डेल्टा एल इज जस्ट, डेल्टा एल किन चीजों पे डिपेंड करेगा? L, alpha, and delta T. यस, अल्फा इज द कांस्टेंट, एल पे डिपेंड करेगा और डेल्टा टी पे डिपेंड करेगा. लवली. सो वी जस्ट पुट दिस हियर. This becomes L 1 plus alpha delta T. So this is your new length. Similarly, your new area is just your old area and 1 plus beta delta T. And similarly, your new volume is your old volume 1 plus gamma delta T. Now हमको वॉल्यूम पता है L क्यूब है और S पता है L स्क्वायर है, क्योंकि L स्क्वायर, दिस इज L, सो द सरफेस एरिया विल बी L स्क्वायर. सो उन तीनों की वैल्यूज उठा के इसमें डालो. सो दिस इंप्लाइज S डैश इज इक्वल टू व्हाट? L स्क्वायर 1 plus beta delta T. Correct? Yes, What sir. about V prime? L cube 1 plus alpha delta gamma delta T. Yes, 1 plus gamma T. Lovely. So now this is the new volume, this is the new surface area, and this is the new length. लेकिन अभी भी ये क्यूब ही है, राइट? जब एक्सपैंड किया अभी भी एक मतलब एक काइंड ऑफ मतलब तो हो सकता है एक मतलब एक्चुअली नहीं होगा क्योंकि इट्स अ सिमेट्रिक एक्सपेंशन, क्योंकि हमने एक ही गैस ली है. अगर अलग अलग गैस लेते इसमें, जैसे मान लो हमने दो अलग अलग गैस ली, तो वो दो अलग अलग तरीके से एक्सपैंड करेंगे. सो इसलिए वो थोड़ा जनरल केस रहेगा. हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि गैस एक ही है, इट्स लाइक अ यूनिफॉर्म गैस. ओके, सो नाउ हमको वी प्राइम पता है ये है, और तो हम वी प्राइम एक और जगह से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? सिंस दिस इज द लेंथ,
your V prime should also be equal to L prime cube, right? And your S prime should also be equal to your L prime square, correct? Yes, no, maybe? Yes. लवली. ओके, सो यानी कि हमको पता है कि ये जो चीज होनी चाहिए यहाँ पे, दिस शुड बी इक्वल टू एल, सॉरी दिस इज क्यूब हियर, इट शुड बी इक्वल टू एल क्यूब 1 plus alpha in delta t. This is a delta t, this is also a delta t, and the whole cube. And similarly this should be equal to, from here, L square 1 plus alpha delta t का whole square. Okay, नाउ इसमें दिख रहा है इस इक्वेशन में कि एल स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और इस इक्वेशन में दिख रहा है एल क्यूब कैंसिल हो रहा है, राइट? तो हमारे पास अभी ये दो इक्वेशंस है. सो नाउ लेट्स टेक दीज टू इक्वेशंस एंड ट्राई टू सिंप्लीफाई देम. Let's call this equation 1 and let's call this equation 2. So let's take equation 1 right now. Equation 1, what is it? What does it say? It says that 1 plus beta delta t is equal to, इस स्क्वायर को अब एक्सपैंड करो, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी. ओके, नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन कि हमारे जो गामा था वो फॉर एन आइडियल गैस, फॉर अ गैस इट वाज ऑफ द ऑर्डर 10⁻³ तो सॉलिड और लिक्विड के लिए 10⁻⁴, 10⁻⁵, राइट? सो ये जो अल्फा स्क्वायर वाली टर्म जो होगी, अगर 10⁻⁵ है तो अल्फा स्क्वायर 10⁻⁻10 हो जाएगा. कितना छोटा नंबर है, राइट? सो दैट इज व्हाई व्हाट वी कैन डू इज वी कैन इग्नोर दिस नंबर. Since alpha is smaller than 1, it is still greater than 0, but it's smaller than 1, so you can ignore alpha squared term. So this implies, and the 1 obviously cancels out, beta delta t is equal to 2 alpha delta t. You can cancel out the delta t's. What do you get? You get beta is equal to 2 alpha. Let's call this equation 3. Now, let's start with equation 2. This was equation 2. What does this say? This say that 1 plus gamma delta t is equal to 1 plus alpha delta t whole cube, which is equal to a cube plus b cube plus 3a is 1 into alpha squared delta t squared plus 3 into 1 squared into alpha square, sorry, alpha delta t. Okay, lovely. Yeah, alpha delta t. Now again, notice you have an alpha cube here, so you can ignore this term, and you can ignore this term also because you have an alpha square here. What is remaining? You have 1 plus 3 alpha t on the right hand side and 1 plus gamma delta t on the left hand side. You can cancel out the ones. So what is remaining? You have gamma delta t is equal to 3 alpha delta t. This implies you can cancel out the delta t's. You have gamma is equal to 3 alpha. This is equation 4. So now from 3 and 4, we have found out all the interrelations between alpha, beta and gamma. क्या क्या निकल के आया? निकल के आया कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 2 विच इज इक्वल टू गामा बाय 3, राइट? सो ये इन तीनों एक्सपेंशन में एक रिलेशन होता है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 2 इज इक्वल टू गामा बाय 3. बट ऑब्वियसली दिस इज ट्रू व्हेन, इसमें कई assumptions गई हैं. पहली assumption कि एक ही गैस थी, दूसरी assumption डेंसिटी कांस्टेंट थी, तीसरा assumption कोई और बता सकता है क्या assumptions लिए हमने यहाँ पे? और Small value of alpha. yes, solve a small value of alpha. Lovely. Okay, अभी तक कोई questions? सर मुझे एक्चुअली यहाँ से समझ में नहीं आया जो आपने किया है. v प्लस गामा डेल्टा टी, उसके बाद सर आपने दोनों तरफ क्यूब कैसे कर दिया? एक मिनट फिर से बोलना, कहाँ पे? सर जो ये v डैश इक्वल्स एल क्यूब प्लस 1 प्लस गामा डेल्टा टी. Yes, here this. ये समझ नहीं आया, ये कैसे आया?
ये तो समझ में आया सर, मतलब उस साइड फिर क्या कहते हैं RHS में क्यूब कैसे होगी ये बताओ। अच्छा, तो देखो v डैश l डैश क्यूब है ना, क्योंकि है तो ये क्यूब ही, यस सर, यस सर। राइट। सो यहाँ पे मैंने बस l डैश लिया, l डैश ये था, और इसको होल क्यूब कर दिया, ओके इसकी ओके वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दिया, दैट्स इट, दैट इज ऑल आई डिड। ओके सर। तो इसमें हम कर क्या रहे हैं, हम देख रहे हैं कि एक्सपैंड हो रहा है, एंड जो नए एक्सपेंशन हमने अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में निकाले। उसके बाद हमने एक ये नोटिस किया, देखो ये यूजफुल था कि हमने क्यूब लिया इनिशियली, बिकॉज वहां से हम ये एक एक्स्ट्रा रिलेशन आता है हमारे पास जो चीजों को बहुत आसान कर देता है, इसलिए ये क्यूब लिया गया यहाँ पे। क्योंकि इसके v डैश इज जस्ट इक्वल टू l प्राइम क्यूब, एंड l प्राइम आपने यहाँ पे निकाल ही दिया था, तो इसलिए ये हो गया। एनीथिंग एल्स? नो? ओके, lovely. So let me just clear this. Okay, now let's think about actually this. Let's discuss this. Can you give a molecular explanation? Explanation of why does thermal expansion happen? कोई तुक्का मारना चाहेगा? So, when a substance is heated, the molecules begin to vibrate and move apart, and thus more distance is created between themselves. So I mean, तो molecules है, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है। अब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, राइट, बिकॉज टेम्परेचर इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी, यानी कि उसका वेलोसिटी बढ़ा। यस, व्हाट एल्स हैपेंड? सो हाउ डज इट गो farther from each other? The random motion increases. Yes, so there is more random motion. Lovely, lovely. So these both of these things are true. Random motion increase, and I'm sorry, आपने पहले क्या बोला था? So पहले मैंने नहीं बोला था. नहीं, उसने उसने क्या बोला था पहले? I said that the molecules start to vibrate. यस, सो इसेंशियली क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मान लो 0 डिग्री केल्विन पे है, डिग्री नहीं होता केल्विन है, केल्विन में इट्स नेवर डिग्री, सो यू आर एट 0 केल्विन। सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट ये कुछ एक्चुअली आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ हाउ दिस लुक्स. So if you plot the potential energy with the distance r, where r is this distance between two molecule, so how does this graph look like? This graph looks like this. एंड देखो पॉजिटिव एनर्जी होगी तो यानी कि एनर्जी बहुत ज्यादा है और वो रिपेल हो जाएगा। जैसे जब नेगेटिव एनर्जी होगी तभी वो बाउंड हो सकता है, तो यानी कि अगर इस जीरो से ऊपर होगी एनर्जी तो फिर वो बाउंड से निकल गया है, एंड वो दोनों अलग अलग हो चुके हैं। लेकिन अगर इन दोनों की टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, सो अब बाउंड है। सो नाउ इफ यू सी दिस इज डिस्टेंस r, तुम जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हो तो क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी तो उसकी एनर्जी जो है सिस्टम की वो धीरे 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 करके बढ़ती जाती है, एंड इट नेवर टचेस, सो यू कैन स्लोली स्लोली रिमूव दिस। नाउ अब अगर मैं जब 0 केल्विन पे हूं, मैं कहाँ हूं, मैं इस पॉइंट पे हूं, बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे। लेट्स कॉल दिस पॉइंट ई नॉट। इस ये जो एनर्जी है इस पॉइंट की पे लेट्स कॉल इट ई नॉट। नाउ अब मैंने टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाया, जब मैंने टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाया तो वो इस स्टेट में आ गया, थोड़ा सा ऊपर वाली स्टेट में आ गया क्योंकि उसमें एनर्जी ज्यादा है, राइट। लेट्स कॉल दिस E1। नाउ अब एनर्जी ज्यादा है तो देखो क्या हो रहा है, जैसे ही ऊपर जा रहा है इसका ये डिस्टेंस कहाँ पे ये है, ये भी बढ़ रहा है, राइट। जब मैं एनर्जी और बढ़ाऊंगा तो अब डिस्टेंस ये हो जाएगा, एनर्जी और बढ़ाऊंगा तो डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा। सो द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग बिटवीन द वाइब्रेशन बिटवीन द टू एटम्स इटसेल्फ।
सो अगर एवरेज डिस्टेंस को मैं कुछ मैक्सिमम डिस्टेंस माइनस मिनिमम डिस्टेंस डिवाइड बाय 2 करूं, फिर मैक्सिमम डिस्टेंस इज दिस एंड मिनिमम डिस्टेंस इज दिस, इसका यहाँ पे करके, या फिर इसमें के लिए मिनिमम डिस्टेंस ये हो गया एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ये हो गया। तो एवरेज डिस्टेंस जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ वो राइट की तरफ शिफ्ट होता चला जा रहा है। तो इसलिए सिंस दिस एवरेज डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, your volume is also increasing. Does that make sense? Yes, sir. Lovely. Now, can somebody give me a counter example? In the sense कि एक कहीं तुमने ऐसा देखा है कि टेम्परेचर तुमने बढ़ाया हो और एक्चुअली वॉल्यूम कम हो गया? आइस। आइस में नहीं होता, बट यस वाटर में होता है। सो That इन is basically what. ice is not water. Ice is a different state of water, but okay, I understand what you mean. In water, from 0 to 4 degrees Celsius, 0 to 4 डिग्री सेल्सियस इस चेंज में तुम्हारा एक्चुअली जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता है, वो डिक्रीज हो रहा है एंड देन फिर इंक्रीज करता है। सो उसका एक मिनिमम पॉइंट आता है, और इस पॉइंट को तो मैक्सिमम डेंसिटी का पॉइंट भी बोल सकते हो या फिर मिनिमम वॉल्यूम का भी पॉइंट बोल सकते हो। कोई कोई सोच सकता है ऐसा क्यों होता है? Molecular arrangement. या मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट तुम कह सकते हो, बट इट्स एक्चुअली ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट्स बिकॉज द वाटर में खाली ये वाला इंटरेक्शन नहीं होता। ये वाला जो इंटरेक्शन जिसका मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया है, ये खाली मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है, कि मतलब दो एटम्स जो हैं वो खाली एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर ये एटम इस एटम से भी लिंक्ड है किसी तरीके से थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, then this actually this graph changes a bit. And how does this graph change? Well, this graph becomes more steep and then quickly it goes up and then it starts to be like that. So यहाँ पे टाइम ज्यादा स्पेंड कर रहा है और यहाँ पे टाइम स्पेंड कम कर रहा है। इस वाले केस में क्या हो रहा था, यहाँ पे टाइम ज्यादा स्पेंड कर रहे थे, यहाँ पे टाइम स्पेंड कम कर रहा था, इसकी वजह से वो राइट शिफ्ट हो रहा था। अभी ये नहीं होगा, इसकी वजह से वो लेफ्ट शिफ्ट होगा। सो दिस इज समथिंग दैट वन शुड कीप इन माइंड। ये डायग्राम एक्चुअली मतलब दिस इज इंपॉर्टेंट। ये आपको मॉलिक्यूल्स कैसे कंबाइन होते हैं, उसकी एनर्जी क्या होती है, वो आपको ये वाला ग्राफ बताता है। ओके, लवली। इसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आपको कुछ आइडिया है कि थर्मल एक्सपेंशन के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? कुछ सोच सकते हो कि कहाँ पे हमको ध्यान रखना जरूरी होता है? Okay, let me give you an example. For example, if you talk about railway tracks, so railway जो tracks होते हैं, what are they made of? They are essentially made of iron, right? And गर्मियों में iron would start expanding. तो अगर मैं तो इसको थोड़े थोड़े पार्ट्स में बनाया जाता है ना, उसके बाद फिर दूसरा पार्ट यहाँ पे लगा दूं, तो फिर वो एक्सपैंड जब करेगा तो फिर वो मुड़ जाएगा, राइट? क्योंकि वो एक्सपैंड करना चाहेगा लेकिन जगह ही नहीं है, तो फिर वो मुड़ जाएगा। यही होता है अगर तुम कुछ मतलब टेक टेक हाउ डू यू से, क्या कहते हैं उसको, और जूस जैसे पीते हैं, if you take a Straw. plastic straw, absolutely, if you take a plastic straw and if you push from both sides, क्या होता है, वो बीच में से मुड़ जाती है। एंड एग्जैक्टली वही चीज होनी चाहिए, लेकिन उसका ध्यान रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम थोड़ी जगह दे देते हैं बीच में, ताकि जब वो एक्सपैंड करे उसके बाद इतनी जगह हो कि वो एक्सपैंड हो जाए। सो दिस इज वन एप्लीकेशन दैट वन कैन थिंक ऑफ। एनी अदर एप्लीकेशन वन कैन थिंक ऑफ? वेल, और कहाँ ऐसी ऐसी चीजें होती हैं? वेल, व्हेन यू आर बिल्डिंग अ ब्रिज,
when you're building a bridge, you need to take care कि उसका पूरा structure कितना expand करेगा और कितना कितना contract करेगा ठंड में. So उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ता है. And okay, okay, lovely, lovely, lovely. और कोई example किसी के दिमाग में? No. Okay. The bursting of glass while we pour hot water into it. Can you say that again? I was saying bursting of glass while we pour water into it. Oh, okay, okay. Glass essentially, if you put in hot enough water, it will blow up. Yep. हाँ. Actually, हाँ, मतलब we hot enough water, sure, but I mean, I don't know because after 100 degrees Celsius, it will just be steam. So I don't know. I think you can put, but what can break a glass? Because ये मेरे साथ हुआ था chemistry lab में. If you pour a very concentrated acid, let's say HNO3 or sorry, HNO3 कह रहा हूँ, HCl or H2SO4, and then you pour in water, तो फिर वो एकदम से splash करता है, वो बहुत ज़्यादा heat create करता है, and and it just blows up. One of my friends in school during the board exam, उसने टीचर की टेबल पे जाके मिक्स कर दिया, तो टीचर की टेबल भी फट. कुछ भी करते हैं लोग. It was funny. Anywho, अच्छा ठीक है. अभी तक हमने देखा कि वन डिमेंशनल एक्सपेंशन, टू डिमेंशनल एक्सपेंशन एंड थ्री डिमेंशनल एक्सपेंशन. Now, question. So my question for you is, how would density change with temperature? If I'm increasing delta T, if I'm increasing the temperature by delta T, how does rho change? This is a question for you, so please go ahead and try to solve Volume is this. increasing, right? The volume is increasing, right? Yes. So density will decrease. Decrease. Decrease, but how? Exact formula. It is m upon v. As volume increases, Absolutely, but exact formula I want. density's formula or So the new density in terms of old density. Blah blah blah. कुछ idea? अच्छा, so how about somebody tell me how to do it? साथ में करते हैं, 3-0 करते हैं, बताओ. So initially, what was the density? Well, you take some by volume, m by v. and there is some mass inside it, and it has some volume. So it's just m by v. Absolutely correct. What is your new density? M by V dash. M by v dash, because mass is the same, because same ही amount of matter है, लेकिन बस वो expand कर गया है, right? So now what do we do? We put V dash in the formula. Lovely. We can just substitute. मतलब we can just divide the two equations, right? You have rho dash by rho is equal to v by v dash, correct? So what is v by v dash? Well, v dash is just v, uh, 1 plus gamma delta t, right? So this implies rho dash is just the v cancels out, obviously, is equal to rho divided by 1 plus alpha delta t.
इज दिस इट कि इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? वेल, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इफ यू नोटिस दैट गामा is very very small than 1. Since gamma is very very small than 1, you can write this as 1 plus alpha delta t to the power minus 1, and you can just use your binomial expansion to write 1 minus gamma delta t. Make sense? So essentially, rho dash is equal to rho 1 minus gamma delta t rather than a plus. So a volume goes up as 1 plus gamma delta t, and the gamma and the rho goes up as 1 minus gamma delta t. Clear, everyone? चलो उस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं साथ में सर मिलके। वाली स्लाइड दिखा देंगे एक बार, क्या चीज? प्रीवियस स्लाइड। Previous slide. Why? What did you want to see? I don't think there are slides here. I don't know how to go back. What is the question? I mean, what did you say after this rho dash equals rho upon 1 plus gamma delta t? You said me something. Okay. So rho dash हमको पता चल गया is rho 1 plus gamma delta t. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 plus gamma delta t to the power minus 1. Now Yes. since gamma is very very small, smaller than very smaller than 1, आप इसको binomial expansion में कर सकते हो. Binomial expansion क्या होगा इसका? 1 minus gamma delta t plus gamma square delta t square minus gamma cube delta t cube and plus dot 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 till infinity. And since gamma is very small, all these terms will go away. So all you'll have is rho 1 minus gamma delta t. ठीक? Yes, sir. Thank you, sir. Lovely. Okay. Okay. Let's do this question. Should I read out the question or should I? Chalo, I'll write it down. It's okay. A clock uh, with an iron pendulum keeps correct time at 20 degrees Celsius. How much will it lose or gain if the temperature changes to 40 degrees Celsius? Question mark. And your gamma is given to be 36 into 10 to the power minus 6 per degree Celsius. Sorry, this is alpha, this is not gamma. Obviously, one dimensional expansion, right? I'm giving you 4 more minutes. इस पे सोचो आराम से. 6:10 पे I'll talk to you.
Okay. Any thoughts? क्या हो रहा है? नहीं समझ आ रहा, कैसे करें? समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है तो पूछो प्लीज. Come on, tell me. किसी ने तो सॉल्व किया होगा. Yes, I'm still solving it. I'm sorry. I was saying I was just solving it for the final answer. Okay, okay. Take a couple of minutes. आराम से करो. 6 root 10 to the power minus 59. Is that what you're getting? Seriously? Yes, sir. 10, as in, are you saying sixth root of this? No, sir. So 6 multiplied by root to the By road. minus 59? Yes. Okay, can you tell me how did you go about doing this? Sir, that time period of a pendulum was, I think, 2 pi L Root L by? G square plus A square. No, it's just root L by G. That's it. Oh, yes, yes. Oh, Doesn't matter. okay. So, it was Then what? T dash minus T. Okay. So what is T dash? Is 2 pi root L dash by G, right? Yes. Okay. और कुछ बता सकते हो उसमें? और कुछ बता सकते हो इसके बारे में? L dash is equal to L plus alpha delta T. L dash is equal to L 1 plus alpha delta T. Okay, 9 seconds. That sounds slightly better. Okay. Then, So we calculate L dash. okay. How about we go step by step? Okay, rather than going haphazardly, let's go step by step and let's try to figure out how to go about doing this. फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी क्वेश्चन को देखने के लिए सबसे पहली चीज क्या पता होनी चाहिए? व्हाट इज आस्क्ड, क्या पूछना चाह रहा है वो. What is it trying to know is how much will it lose or gain if temperature changes. So what is the loss or gain? So loss or gain you can calculate in terms of percentages, right? So essentially if you know temperature, temperature, the time period at 40 degrees Celsius minus time period at 20 degrees Celsius, divide by time period at 20 degrees Celsius and multiply that by 100, you will know how much in percentage terms, how much it has changed. Correct? Okay. First of all, we need to recognize that what is the time period of this pendulum? Do we already know that? Since it's saying that it keeps the correct time, क्या ये हमको थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा है? इसकी मतलब जरूरत हो सकता है ना पड़े, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है हमको.
वेल पेंडुलम कैसे, हाउ डज दिस पेंडुलम क्लॉक्स वर्क? पेंडुलम जो है वो एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पे जाने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड। और फिर वापस आने में 1 और सेकंड। तो टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया? 2 सेकंड। So you already know that the time period is 2 seconds when it's at 20 degrees Celsius because वो सही काम कर रही है. Okay. Now what about length? Well, हमको length 20 जो है वो इनिशियली है. ओके. एंड लेंथ 40 जो है उसको हम कह सकते हैं, let's take a baseline, right? Let's take L is equal to 0 because that's just let's take a baseline कि 0 डिग्री सेल्सियस पे L जो है वो L नॉट है. So L20 जो है वो L नॉट and 1 plus 20 times alpha, and this is again L naught 1 plus 40 times alpha. Okay, makes sense. Now what is the time period? Time period कैसे निकालते हैं? 25 2 pi root L 20 by G, correct? Which is equal to nothing but 2 pi square root of this term, which is L naught 1 plus 20 alpha divided by G. And what is the time period at 40 degrees Celsius? Well, this is again just nothing but 2 pi root L40 by G, which is 2 pi square root of L naught 1 plus 40 alpha divided by G. Okay. नाउ हमको ये T20 पता चल गया, T40 पता चल गया. We need to calculate something like this. Well, I think the easier thing to do is just to divide these two, right? So T40 divided by T20, because I mean इसको बस -1 करोगे और ये आ जाएगा हमारे पास, right? So अगर हम ये calculate कर लें just subtracting 1, we'll get this. So T40 is what? T40 is, so the 2 pi cancels, so पूरा ही लिखते हैं. 2 pi square root of L 1 plus 40 alpha divided by G divided by 2 pi square root of L 1 plus 20 alpha divided by G. G हो गया. L naught हो गया. 2 pi goodbye. Okay, what is left? You have square root of 1 plus 40 alpha divided by square root of 1 plus 20 alpha. How to simplify this further? Well, one realizes again that alpha is very small. So again, you can binomially expand things. How do you binomially expand things? Well, you write this as 1 plus 40 alpha to the power 1 by 2 multiplied by 1 plus 20 alpha to the power minus 1 by 2. And what is this equal to? Is equal to 1 plus 20 alpha, because 40 half नीचे आ जाएगा and ये minus half नीचे आएगा तो ये 1 minus 10 alpha. Okay. So simplify this further. What do you get? You get a 1. You get 20 minus 10, so 10 plus 10 alpha, and square term minus 200 alpha square. Why is this stopped working? That's fascinating. Okay, this is alpha squared, and since this is alpha squared, you can keep this as 0. So what essentially you have T40 by T20 is equal to 1 plus 10 alpha, and alpha की value यहाँ दी हुई है, so you can just put it here. 10 is for -6 degrees Celsius inverse, and you will get some value मतलब अच्छा चलो let's do it. You get 1 plus 5 1 plus 36 into 10 is power what, 10 is power minus 5, 36 3.6 into 10 to minus 4. So
या एंड वन को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो T40 minus T20 divided by T20 is just 3.6 into 10 power minus 4. This is a minus 4 here, obviously. So you can calculate the percentage from here. Multiplied by 100, so it's like 0.336%. It changes. And hence you can calculate कि 24 घंटे में कितना time lost होगा, and which will be around 10 seconds you lose in a day. Okay, this question is clear to all, right? किसी को नहीं समझ आया? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है. वी फिगर आउट व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट, फिगर्ड आउट क्या गिवन था, ये हमने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन निकाल ली. दिस इज जस्ट अ फन थिंग. एंड उसके बाद टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाया, उसमें वैल्यूज डाली एंड जस्ट डिवाइड द टू, बिकॉज हमको ये निकालना है. तो या तो इसी फॉर्मूले में सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर दो, या फिर मतलब you can just divide the two and then go ahead and solve it. And the important thing is this binomial expansion here. Binomial expansion आपके life बहुत simple कर देता है, because what is binomial expansion is doing, you have 1 plus alpha to the power n. Well, you can write this as 1 plus n alpha plus n into n plus 1 by 2 alpha squared plus dot dot dot, and alpha square और बाकी सारी terms जीरो हो जाती हैं, तो बस 1 plus n alpha रह जाता है. तो इसलिए 1 plus alpha to the power n where alpha is small, you can always write that as 1 plus n alpha. सो एक बार आपने ये समझ लिया, सो आगे चीजें बहुत सिंपल हो जाती हैं. लवली, क्लियर एवरीवन? हाँ ना, कुछ तो बोलो यार. What was the given value of alpha? Alpha was given to be 36 into 10 to the power minus 6 per Celsius. Okay. Yes. Okay, chalo. Let's clear and let's move ahead. Okay, let's come back to some basic definitions. Now we'll define something which is going to be important, which is called the specific heat. देखो, अभी तक हमने हीट की वजह से एक्सपेंशन, हीट सॉरी टेम्परेचर चेंज की वजह से एक्सपेंशन की बात की है. लेकिन उससे पहले हमको ये समझना चाहिए कि अगर मैं कुछ हीट देता हूं तो उससे कितना टेम्परेचर बढ़ेगा. एंड दैट इज एसेंशियली व्हाट स्पेसिफिक हीट is trying to answer. By definition, it means what is the definition? I'll just write down the definition. Specific heat of a substance may be defined as the amount of heat required to raise the temperature of a unit mass, that is important, of a substance through 1 degree. 1 degree. Okay, what does this mean? It means that specific heat, कुछ C उसको बोल दो, it is the amount of heat. So यानी कि आप डेल्टा Q कुछ heat put कर रहे हो per unit mass. So divide by how much mass you have there, and to change it by 1 degree Celsius. So per degree Celsius, per change in temperature. So this is how you essentially define specific heat. From here, one can also see कि delta Q अगर मैं heat दूं तो कितना temperature change होगा. So if I'm giving you, if I'm putting in delta Q amount of heat in a substance, so it will depend on its mass, on its specific heat, obviously, and आप कितना temperature change हो रहा है उसमें. Okay.
Now one can define this, इसका units कोई बता सकता है मुझे? Both CGI and SI. Like C का units. Sir, joule kilogram inverse Kelvin inverse. Kilogram inverse and Kelvin inverse. Kelvin inverse. Right? This is the SI unit. Yes. What about CGS? Calorie gram inverse and Gram inverse Kelvin inverse. and degree Celsius inverse. So in CGS, one is using degree Celsius. Remember that. Okay, one can define this thing, which is the heat capacity. But one can also go ahead and define something slightly different, because यहाँ पे हमने क्या specific था? यहाँ पे specific था unit mass. कि you are taking unit mass. Rather than taking unit mass, you can also take unit number of moles. So अगर आप chemistry में काम कर रहे हो, so you'll hear about the molar specific heat, which is essentially defined the same thing, exactly same thing. So it is the amount of heat required to raise the temperature of a unit mole. Rather than mass, what you have is a mole of a substance through 1 degree Celsius. So how will you define this C, this new C? Well, you'll define this similarly as delta Q by N delta T, where N is the number of moles. Okay. Generally, one uses a specific heat in physics and one uses molar specific heat in chemistry. Generally, that happens. Uh, okay. Any question, Abhi tak? No, sir. Lovely. Okay. Now let's move on to another definition, which is very, very closely related to specific heat, which is the thermal capacity. So thermal capacity is essentially if you remove the mass altogether. So essentially amount of energy required to increase temperature by 1 degree Celsius. 1 degree Celsius, 1 degree Kelvin, 1 Kelvin, something, anything, 1 degree by 1 degree. Okay, so notice that this does not talk about mass, or this does not talk about the number of moles. This is denoted by capital S, and from the definition, it's obvious. It's just delta Q by delta T, which is nothing but MC, right? Because delta Q is MC delta T cancels out, and what you get is MC. So this is what thermal capacity is. Now there is another concept which I think is the last one that we're going to No, sir. discuss, Sir, which is what is called the water equivalent. sir, Huh. sir, is it not the formula for entropy also? Yes, very good. Good catch. Lovely, lovely, very good catch. And the answer is yes and no, because yes, it's delta Q by delta T, but at a given, so you keep internal energy constant. That is what entropy is. Here you don't do that. So there is So a how slight do we difference. differ, sir? Huh? How do we differ? Means how do we know that this is thermal capacity and this is entropy? Yeah, usme you'll have a given internal energy. That's why Okay, you'll okay, have a given pressure, or you'll have a given volume essentially. When I say internal energy, because internal energy is okay, sir. Thank you, sir. V delta T, right? Huh? So you'll have something constant here. Then you'll talk about entropy. But since you're anything can change. So this is a more general thing, which is called the thermal capacity. Okay, so now let's talk about water equivalent.
So, as the name suggests, water equivalent of a body is essentially the amount. Sorry, I'll just write this down. The mass of water which requires the same amount of heat, which requires the same amount of heat, same amount of heat uh, to raise the temperature of a body by 1 degree. So essentially, how much energy you're putting in? So you're putting in delta Q amount of energy. Now, if you put that delta Q amount of energy into m mass of water, so what is m? So that the increase in temperature of water is also 1 degree Celsius. That is what water equivalent means. So it's the equivalent amount of water that you'll need to essentially get the same energy. Make sense? Yes, no, maybe. Okay, I'll try to find some question on this. I did have a couple of questions. Okay, I think we'll do questions in some time. Abhi, I need to finish this. Okay. Now, let's Can you come. please repeat this one, water equivalent? I'm sorry? So can you please repeat this water equivalent? Yeah, water equivalent is essentially. So now, okay, think about it like this. अभी तक हमने स्पेसिफिक हीट की बात की. ये कुछ बॉडी ए है, इस पे मैंने कुछ डेल्टा क्यू सप्लाई किया एनर्जी, और उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया बाय वन यूनिट, बाय 1 degree. This temperature increased when I supplied this amount of energy. Now, water equivalent is essentially कितना mass of water चाहिए होगा. So you take some water. So what is the mass of this water such that if I give delta Q energy, इसका भी temperature 1 degree से ऊपर जाए. वो कितना mass होना चाहिए यहाँ पे? So we're basically comparing that mass and water. Yes, mass of the water with so essentially we're trying to calculate the mass of the water in terms of That body we were actually calculating before. absolutely, absolutely. So if let's say the specific heat of this substance A is, let's say, Ca, right? So and इसका कुछ mass था Ma. So delta Q is what? Ma Ca delta T, right? And इसमें कुछ mw मान लो, which is essentially the water equivalent, mw, and इसकी कुछ cw मान लो. So your delta q is equal to mw cw delta t. Since delta q is the same and delta t is the same, let's just divide these two. So essentially, let's dividing the two, what do you get? You get 1 is equal to MACA divided by MWCW. So mass of water, I'm writing it here. So mass of water is just equal to the mass you had of A times the specific heat of A divided by specific heat of water. Okay, make sense? Yes, sir. Lovely. Okay, let's clear this and let's talk about something related to this. But yeah, you'll see. So, have you ever heard of calorimetry? Calorimetry, metry, I don't know. Calorimetry. Any ideas what this can be? Measuring energy. Measuring energy. Now yes, so right now अभी तक हमने थर्मोमीटर जो यूज किया, जिसमें थर्मोमीट्री होता था, उसमें हम टेम्परेचर मेजर करते थे. Since now we are trying to measure calories,
from calorimetry from calories. So essentially, we're trying to measure the amount of heat. Okay, amount of the amount of heat or amount of energy that is being transported from A to B. So, what is the principle behind this? The principle behind calorimetry is that if you have an object A and an object B, इसका कुछ टेम्परेचर है टी टी ए बोल दो, इसका कुछ टेम्परेचर है टी बी, ठीक है? तो यानी कि दिस लैंड लेट्स से टी ए इज हॉटर देन टी बी, सो यानी कि ए जो है वो बी से गर्म है. नाउ इफ यू पुट द टू इनटू कांटेक्ट, उन दोनों को हम कांटेक्ट कर दिया, heat will start flowing. Now, what the principle of calorimetry says is that the heat that is lost by A should be equal to heat that is gained by B. It seems very obvious that this should be true, but if you think about it, it is not. In the sense that what we are assuming is that ये बंद है और हीट सराउंडिंग्स में नहीं जा रही है. So to use this principle, essentially, what we need to do is we need to make an apparatus which is completely isolated from the surroundings, and वहां पे heat change देखोगे और वहां से तुम heat calculate कर सकते हो. But the principle behind it is that the heat lost by A is the heat gained by B. When two bodies at different temperatures, a hot body and a cold body, are brought and put in contact with each other. ओके, इस पे कैलोरीमेट्री से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और इसके एग्जांपल्स हम करेंगे. आपको होमवर्क भी दूंगा मैं, एंड अभी आई नीड टू मूव अहेड. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट. सो अभी तक हमने क्या क्या किया? वी टॉक्ड अबाउट, वी स्टार्टेड विद व्हाट डिड वी स्टार्ट विद? समबडी कोई याद दिलाओ यार, मेरे को याद नहीं रहता मेरे को चीजें. So relation between alpha, beta, and gamma. अल्फा बीटा गामा के बीच में रिलेशन हमने निकाले. उसके बाद क्या किया? इसका मॉलिक्यूलर एक्सप्लेनेशन दिया. और क्या किया? We defined some things which are the specific heat, then molar specific heat, Cn. We the thermal capacity or heat capacity, which Water we've written equivalent. by S. Huh? Water equivalent. Yes, and water equivalent. And then we talked about calorimetry. Lovely. So now let's move on to a very closely related thing, which is essentially what happens if I keep on heating. What happens if I keep on heating a substance? This is Q. So for example, I have water. ठीक है, ये मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है for the y-axis. इस पे इसका कुछ Q है. Now, as I increase the increase Q, my T also increases, right? But it will increase up to a point, which is essentially 100 degrees Celsius. So after it reaches 100 degrees Celsius, for some time, the temperature will not increase. And this essentially, this thing that is happening in between, after that it forms steam and then it goes up with steam. Okay, but this ये जो बीच का period है, this is what a phase transformation is. Meaning that the phase is changing from liquid to gas. In this case, to a liquid to gas, because we're talking about water and we're talking about these values. But whenever there is a phase change
your temperature at that point remains constant. So you keep on putting in heat, but the temperature does not change. Because what is essentially happening? What is happening is that the molecules itself, which are bound together by these hydrogen bonds in water, for example, the you provide enough energy, it reaches 100 degrees Celsius, and then you provide even more energy. So now these bonds are also breaking. So this energy, where is it going? It's going in breaking the bonds rather than in increasing the temperature. This energy is going in breaking these bonds. So some examples of change of state. कोई examples बता सकते हो मेरे को? Water to water vapor. Water to water vapor. Sir, I had a doubt. Yes. Sir, while we are increasing the temperature, so if we are up to like reduce the time interval for this constant thing, we can increase the heat, right? Time. Where is time coming in? Time. I mean, no, yes, time is not coming here, sir, but still that interval that is in between that at what the temperature That we is are. essentially telling you कि तुमको कितना एनर्जी चाहिए इसका स्टेट चेंज करने के लिए. ये जो है Sir, but इसका still, sir, एक्स एक्सेस जो है वो एनर्जी है, राइट? ये कुछ डेल्टा क्यू है. सर अगर मेजर करें सर तो कुछ ना कुछ टाइम पे तो होता ही होगा ना. या कुछ ना कुछ टाइम पे होगा, बट द टाइम डजंट मैटर, राइट? यू आर सप्लाइंग हीट. अब तुम धीरे धीरे करो, तेज तेज करो, उससे क्या फर्क पड़ता है? सर मतलब मैं अगर हीट बहुत ज्यादा बढ़ा दूं या फिर कांस्टेंट रखूं तो बात यही पड़ेगी. नहीं, हीट कांस्टेंट नहीं रख रहा है. हीट आई हम मीन धीरे धीरे बढ़ा रहे कॉन्स्टेंटली हैं. बढ़ाऊं. एक्स एक्सिस पे जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, राइट? आई मीन यूनिफॉर्मली बढ़ाऊं या फिर लॉगरिथमिकली बढ़ाऊं तो बात एक ही रहेगी. हाँ, नहीं, बात तो सेम रहेगी, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं. लेकिन उसमें भी तुम ये नोटिस करोगे कि फॉर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. ओके ओके सर. ये हमेशा होता है. एंड इवन इससे पहले जो हो रहा था, यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम चीज हो रही थी. ये जब आइस से यहाँ पे आइस था, यहाँ से जब लिक्विड सॉलिड से लिक्विड बना, सॉरी आई कॉल इट सॉलिड, जब ये सॉलिड से लिक्विड बना, तभी एग्जैक्टली कुछ एनर्जी थी जो वो बॉन्ड्स को तोड़ने में ही यूज हुई. So water to vapor is an example of liquid to gas. Any other examples? यहाँ पे तो कर ही दिया हमने. Ice to water, which is essentially what? Solid to liquid. Any other examples? कोई और एग्जांपल दे सकते हो? सब्लिमेशन भी कह सकते हैं सर यहाँ पे. Yes, sublimation भी आ सकता है. So essentially example sublimation. Iodine to iodine vapor. Yes, iodine into iodine vapor. Yes, or very common example, dry ice. So which is essentially solidified carbon dioxide. So that is essentially when solid is going into gases. और क्या चीजें हो सकती हैं? लिक्विड टू गैस जा सकता है, सॉलिड टू लिक्विड जा सकता है, सॉलिड टू गैस जा सकता है, और उल्टा भी हो सकता है, राइट? लिक्विड टू सॉलिड जा सकता है, which is essentially freezing, and gas to liquid जा सकता है, which is essentially liquefaction. Okay, so there are these 5 things that can happen. Now, okay. Now this amount of heat, the heat required to change the state, what is this called? This is called latent heat. सो लेटेंट हीट, इस हीट को कहते हैं जितना हीट चाहिए आपको फ्रॉम एक फेज से दूसरी फेज में जाने के लिए. ओके, यस सर. so this delta Q is essentially what latent heat is. And what is it dependent on? Well, it's dependent on just how much matter you have. So is delta Q is equal to is proportional to M. So this implies delta Q is equal to M times some constant, which we call as constant of latent heat. Okay, so
तो लेटेंट हीट हम यहाँ पे निकाल दिया, इज जस्ट एनर्जी पर यूनिट मास। इसका यूनिट्स कोई बता सकता है मेरे को? जूल पर केजी। जूल पर केजी। सर आपने यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी में टेम्परेचर कंसीडर क्यों नहीं किया? बिकॉज टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा, एट दैट डिरेक्शन, ओके ओके। यस, बिकॉज द टेम्परेचर, दैट इज व्हाट हैपेंस राइट, जब फेस चेंज हो रहा होता है तब टेम्परेचर सेम रहता है। यस सर, यस सर। सो सारी जो एनर्जी जा रही है वो बॉन्ड्स तोड़ने में जा रही है। सो ये जो कांस्टेंट है एसेंशियली, ये हमको बता रहा है उस पर्टिकुलर गैस के बारे में या उस पर्टिकुलर सॉलिड के बारे में कि उसका अरेंजमेंट कैसा है और कैसे टूटेगा, मतलब कितनी एनर्जी चाहिए होगी उसको तोड़ने के लिए। एंड वो कुछ कांस्टेंट है, वो एल है और सबके लिए कुछ होता है लेटेंट कांस्टेंट। ओके जैसे फॉर एग्जांपल फॉर ice to water conversion at 0 degrees Celsius, your latent heat is 3.33 into 10 is power 5 joules per kilogram. So यानी कि आपको 3 into 10 is power 5 joules चाहिए 1 किलोग्राम को आइस से वाटर में कन्वर्ट करने के लिए. That's a lot of energy, right? That is a lot of energy. Okay, let's do some. ये clear है सबको, right? यस सर। Lovely. So let's move on to some questions now. जल्दी से. Okay. No. बहुत लंबे questions हैं यार ये. चलो छोड़ो ये कर दें. Okay. I'll write this down. So what is happening? Thermally isolated vessel contains 100 gram of water at 0 degree Celsius of water, not ice but water. That's important. Comma. When air above the water is pumped out. So what is happening when you're pumping out the air above water? You're removing all the vapor. Essentially, that is what you're doing. Some of the comma, some of the water freezes and okay, and some evaporates at 0 degrees Celsius itself. So some of it is essentially being frozen, so it's converting to water, and some is converting to vapor. So this and a very interesting thing is happening here. What I want you to calculate is calculate the mass of ice formed if no water is left in the vessel. Very good. What you know is latent heat of vaporization of water. Latent heat of vaporization, I will call it LV at 0 degrees Celsius is 2.10 into 10 to the power 6 joules per kilogram. And the latent heat of fusion, which is essentially which is fusing, so essentially going from liquid to solid, is given to be 3.36 into 10 to the power 5 joules per kg. Okay, go ahead. दो क्लास में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. वेरी गुड.
अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, आप लोग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में कितना कंफर्टेबल हैं? करा है सर। करे मतलब कंफर्टेबल हो आप लोग सब? यस सर। गुड। कोई बता सकता है इसमें हो क्या रहा है यहाँ पे? यस सर, बस हो रहा ओके। ओके, नहीं समझ आ रहा क्या? नहीं आ रहा तो प्लीज पूछ लो, दैट्स व्हाई आई एम हियर, बताने के लिए आप लोग को। नो सर। नहीं समझ आ रहा? ओके, सो लेट्स थिंक अबाउट यहाँ पे हो क्या रहा है। you have you have 100 grams of water here, ठीक है? Water, not, let's do okay, you have 100 grams of water here and it is at 0 degree Celsius. Now what is happening is that this water is converting into ice and it is converting into vapor, and तो मतलब जितनी एनर्जी वेपर बनने में गेन हुई उतनी एनर्जी आइस बनने में लूज होनी चाहिए, राइट? सो मान लो, what do you need to calculate the ice form? Let's say m is the amount of ice that is formed in the end. Since m is the amount since m is the amount of ice that is formed, just give me a second.
Okay, yes, so sorry for that. So let's say that is there is some mass m of ice that is found. तो मास m अगर आइस का फॉर्म हो रहा है तो बाकी जो है वो वेपर फॉर्म कर रहा है, राइट? सो 100 माइनस m is forming vapor, and so how much energy is being released by forming ice? Delta q, which is equal to m l fusion, should be equal to 100 minus m, which is essentially vaporization, times L vaporization. That's it. So जितना amount of heat fusing में निकल रहा है वो सारा का सारा इधर जा रहा है. That's it. Just put in the values and just solve for m. That is all you need to do. Okay. So just put in the values now. 36 into 10 to the power 5. 2.1 divided by 3.36 into 10, and so on and so forth. You can go ahead and solve this and calculate m. Okay. कोई question यहाँ पे? What is the answer? Yeah, you can just put in the values and just get m. Just substitute. Take it as a homework or something. Okay. समझ आया? Yes, sir. Okay. So essentially here what essentially we're doing is we're using the principle of calorimetry also, because we are saying that the amount of heat lost is how the amount of heat gained. So both concepts are working together simultaneously in this question. And you'll see a lot of questions like this, and I'll give you some questions for homework. I'll tell Nishkash. Okay, so I think we'll stop here, and we'll see each other day after or something. Ciao. Take care.